Good afternoon to all. Good afternoon, Rutuja. Let me just share my screen. Just a second. I'm fine. Thank you, Sanika. So is the screen visible to you all? And I'm audible to you all? Good afternoon to everyone once again. Okay. Very good. चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं. Okay. So good afternoon to everyone. I welcome you all in this session of current electricity. And this is our lecture number 1 on this series. Okay. In the previous lecture, what we have just finished with the capacitors, electrostatic potential and capacitance chapter we have just finished. And now we are starting the new fresh chapter, which is current electricity. Please put yourself on mute. Anita, please put yourself on mute. Who has other? Jyoti. Okay. So इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा है, that is electrostatic potential and capacitance. Now, in the previous 2 chapters, whether you are talking about the electrostatics, electric field and charges, or you talk about the electrostatic potential and capacitance. In both the cases, what we have did, we have assumed that the charge particle is static. Whatever the charge we are talking about in that particular process, whether we are calculating the potential energy, whether we are calculating the forces between them, we assume the charges to be static. That is why that particular segment of physics is termed as electrostats, which means we are talking about the charges, but in the static situation, in the rest position. Okay? Because most of the question में हमने क्या किया? This is the triangle. These charges are placed here, है ना? So in the electrostatic portion, na, we deal with the charge which is in static condition or rest. Okay? But when you start this current electricity means you are talking about the charge which is in motion. Okay? Similarly, when you just open your physics notebook, textbook of 11th class, what do you find in the first chapter? That is mechanics. Mechanics is the full portion. But initially you will find the kinematics. In kinematics, only we deal about the effect of forces. Okay, now what is the why the acceleration is, what is acceleration, what is velocity, what is the speed, but we do not talk about the cause of it. But when we start the dynamics, we also talk about the cause of it. Okay, similarly, in electrostatics, we deal with the charges which is in a static position, and when we start the current electricity, we take the charges in motion. Okay, and when charges is in motion, that particular state is the current. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं. देखो, इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ पढ़ना है, बट फिर भी I'll give you the overview of this chapter. So first of all, कुछ images हैं that I want to show you all, and you will relate this. This one. Anyone guess what is happening here? Anyone? Mehak, Anita, Vaishnavi. Any guesses, guys? What is happening there? What is going on? Have you seen it? Have you seen this phenomena?
हैव यू सीन दिस फिनोमिना? सबने देखा हुआ है, बिजली कड़कना इसे हम बोलते हैं, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ फिजिक्स वी टर्म दिस एज लीकेज ऑफ चार्ज और लाइटनिंग, है ना? देन व्हाई इट इज हैपनिंग? व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज चार्ज इज स्टैटिक, according to the electrostatic portion the charge is being static state. So why is this happening? Similarly, if I ask you, if I show you this one, this is what? A torch. You can see when we push the button, the light's coming up. And got it? Which means something is there that is creating this light. And got it? So now whatever is happening because of the flow of charge. Flow of charge. And flow of charge is nothing but current. What is this? Current. So current electricity को हम किस तरह से define करते हैं? Current electricity is the continuous flow of electrons in a circuit. ठीक है? That particular process is the current electricity. Got it? So you have the definition in your hand. The continuous flow of electron in a circuit is current electricity. ठीक है? Now, अब हमें पढ़ना क्या है? We will talk about the electric current. इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, किसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, व्हाई इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन. आई एश्योर दैट सम ऑफ यू माइट know the definition of electric current, but some of you might feeling like surprise, oh this is the definition. Whatever we are learning is just the is a incomplete information that is being delivered to you. Okay. Now we will see what is the actual definition of electric current and what is this phenomena current is derived from. Okay. Secondly, we will talk about the electric fields in conductor. We have also seen a light of this concept in the previous chapter when we are talking about the dielectric. And when we place the metal in an electric field, we have seen that what happens to the conductor when they are placed in the external electric field. So this phenomena or this concept might be not that new to you, okay, because you have the conceptual knowledge of it, okay, na? Then the third thing, I have given you the idea in the previous chapter also, but a very little bit. But now in this chapter, we will give a detailed analysis of this drift of electron and the origin of resistivity. Okay, from where the resistivity will come in the circuit, why we have to put, why the current is being decrease or increase in the circuit. Okay, what is the role of resistance? That all we will deal in this chapter. And then after the mobility of electron. Mobility means how the electron is being moved. Okay, na? What is the speed of that electron? How much time it will take to move from one place to another place? That is the mobility of the electron. The ability to move within the conductor is termed as the mobility. Okay, got it? So we will talk about that, these phenomena. Now, first of all, the electric current. तो इलेक्ट्रिक करंट की बात अगर हम करें, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट इज द मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. अब देखो ये तो एक बात हो गई, सिंपल सी डेफिनेशन तो हमारी ये कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ मेजर ऑफ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम. कितना चार्ज हमने ट्रांसफर कर दिया पर यूनिट टाइम में, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट. नाउ फ्रॉम वेयर दिस करंट हैज बीन डिराइव्ड, देखो सपोज दिस इज द हिली एरिया, दिस इज द हिल, ठीक है, and from hill the river is being flown and river gone to the plain. We know that these hills are, let's say, h height above from the plain, ठीक है. तो हमें पता है कि water will flow down side, down stream में water का flow. Why is this happening? Because this place is being high potential energy, this place is being at the lower potential energy, low potential energy. So to
minimize or to neutralize this effect, the water will flow up to down. Similarly, when you have the fire, you have blown up the fire, ठीक है, and you put a metal conductor inside it. So what is happened? This end of the temperature, this end of the conductor will have the most temperature of it because it is being in the contact of the this particular, ठीक है, this particular fire के contact में this conductor. तो ये एंड जो है हाई टेम्परेचर पे चला जाएगा, दिस एंड विल बी एट लोअर टेम्परेचर, बट धीरे धीरे क्या होगा, द टेम्परेचर विल ट्राई टू मेंटेन इटसेल्फ, ठीक है, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. So always remember, if you talk about the heat, it will flow from high temperature to low temperature. If you talk about the water, it will flow from high high to low, high to low, ठीक है. अब देख, whatever is the being, whatever is flowing, either it is water or heat, it is flown due to this difference, and that particular difference, this difference of physical quantity, because of which the flow is being taking place, either it is a flow of water, either it is a flow of heat. So that particular change of, or the difference of physical quantity, or the change of, I will write the change of physical quantity here, okay, change of physical quantity is termed as the driving force. ये क्या होगा आपका ड्राइविंग फोर्स, ठीक है. Just a second, this will be the driving force. तो ड्राइविंग फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, ठीक है, या तो वो हाइट का डिफरेंस हो या फिर वो टेम्परेचर का डिफरेंस हो. अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो क्या फ्लो करेगा, हीट फ्लो करेगा. अगर हाइट का डिफरेंस है तो क्या फ्लो करेगा, वाटर फ्लो करेगा. तो ये जो वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, अगर आप बहती हुई मान लिया आपके सामने क्या है, कोई भी रिवर फ्लो हो रही है, यू पुट योर फुट ऑन इट, so you will feel that something is pushing your foot, something is pushing your foot in the direction of flow. क्या सबको महसूस होता है, when you put your foot or hand in the flowing water, ठीक है, either it is being a river or it is being a canal, whatever it is, when you put your hand or foot inside that particular flow, you will feel a push towards the flow. सबको फील होता है, सबने एक्सपीरियंस किया होगा, एवरीवन. नहीं भी किया है तो जाकर के करना कभी, ठीक है. सो विच, इसका क्या मतलब हुआ, हमारा हाथ या पैर जो पानी में है वो बीइंग पुश्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द वाटर, which means water itself is being pushed in the direction from this place to this place, ठीक है, which means something is pushing the water from high to low, and that particular factor is the driving force. Got it? That particular factor is driving force. अब देखो, similarly this flow of water is termed as water current, water current, ठीक है. This temperature flow is termed as heat current, heat current. अब आया समझ में, कुछ करंट का कुछ ओवरव्यू सा मिला. व्हाट इज द करंट, करंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है दैट इज बीइंग फ्लोन इन द वायर, नो. इफ वाटर इज flowing from high place to low place, that is also a water current. Your tap that you, on your household, you must have the taps, okay. When you open the tap, the flow that you will feel, that is the flow of water, and that is the water current, okay. When heat is flow from high temperature to low temperature, that particular flow is what, heat current, okay. Similarly,
we know that similarly, देखो, this is positive, this is negative, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है? हाई होता है। Vp is greater than V, which means charge is also being flown from positive to negative, high potential to low potential, and that particular flow of charge is also termed as the electric current. ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट के लिए ड्राइविंग फोर्स कौन सा है? एनीवन? व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? जैसे वाटर के केस में डिफरेंस ऑफ हाइट इज द ड्राइविंग फोर्स, in the case of heat, the difference of temperature is the driving force. So in the case of electric current, what is the driving force in that case? Anyone? Sanika, Rutuja, Sakshi? Anyone of you? Very good, very good. The difference of potential, the difference of potential is the driving force for the electric current. क्लियर है सभी को? आई होप कि आप सबको क्लियर होगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल होगा उसके अलोंग जो थ्रू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज आल्सो द इलेक्ट्रिक करंट, वी विल सी, बिकॉज वी ओनली कंसिडर कंडक्टिंग मटेरियल टू बी मोस्टली द मेटल विल बी देयर, ठीक है। एंड इन द मेटल द फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी देयर, so the pushing or pulling of electron is much easier. So that is why we represent the electric current is the flow through the conducting material, ठीक है ना। Now suppose this is the positive charge that we have. Positive charge will flow in the direction of electric field, ठीक है। Negative charge will flow in the opposite direction of electric field. Now there will be a net charge flow. This is Q net. Q net will be Q positive minus Q negative, which means whatever is the flow of positive charge minus the flow of negative charge is the resultant flow of charge, ठीक है ना। सपोज अगर किसी मटेरियल में मेरे पास 10 फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन में से 8 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ चला गया, ठीक है। 8 पॉजिटिव चार्ज विल बी देयर। सो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? अगर 10 इलेक्ट्रॉन इधर आ चुके हैं और 8 पॉजिटिव चार्ज गया, तो दैट इज -2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज अगर एक पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट टू राइट चला गया और एक नेगेटिव चार्ज राइट टू लेफ्ट आ गया, विच मीन्स दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया है? नलीफाई कर दिया है, ठीक है। सो वॉट एवर इज द नेट फ्लो is the difference of positive charge flown per unit area minus negative charge flown per unit area, ठीक है। Got it? अब देखो यहाँ जो नेट करंट होगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विल बी आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, एंड क्यू इज द क्यू नेट। अब एक चीज और आप अपने बहुत दिमाग से समझो, देख, ये जो फ्लो हम चार्ज का फ्लो देखते हैं ना, वट एवर द फ्लो ऑफ चार्ज वी विल टेक दिस एज अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। हम ये क्रॉस सेक्शन कैसे लेते हैं? परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना। अगर मेरा फ्लो ऑफ चार्ज इस तरफ है तो मैं क्या लूंगा? ये परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ चार्ज, एंड आई विल सी इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल डेल्टा टी वट एवर इज द नेट अमाउंट ऑफ फ्लो थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया इज द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। सपोज यहां से Q पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट चला गया, Q पॉजिटिव, और Q नेगेटिव मेरा राइट टू लेफ्ट आ गया, Q नेगेटिव, इन डेल्टा टी टाइम्स में ये सब कुछ हो रहा है। तो मेरा जो करंट होगा ना, दैट करंट विल बी Q पॉजिटिव माइनस Q नेगेटिव डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट।
ठीक है. नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ करंट दैट इज बीइंग पॉसिबल. सिमिलरली when you talk about the speed, suppose a car is moving on a particular road, and this car will be traveled a distance in delta t time, ठीक है, and the distance traveled is delta s. So you will write that v average will be total distance divided by total time taken. But there is another velocity also, that is the instantaneous velocity. Instantaneous velocity mein what will happen when this cart is moving to a delta s distance. Suppose this cart is being present at this position for a particular time interval t. Then up to this point, whatever is the distance, we will say that v instantaneous is equals to s by t, velocity at that particular instant. Similarly, in the conductor, if you will see, कंडक्टर में क्या होगा, ये पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन है जो हमने माना है कि इसे क्रॉस जो भी करेगा लेफ्ट टू राइट, और करंट की डायरेक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम देखते हैं. तो इस डायरेक्शन में जितना नेट चार्ज होगा फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, दैट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. सो सपोज हमने डेल्टा टी टाइम के लिए देखा, तो डेल्टा क्यू चार्ज हमारा नेट चार्ज मुझे मिला. तो यहां से जो करंट होगा ये एवरेज करंट, टोटल चार्ज फ्लोन पर यूनिट. नाउ अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं. अब मुझे निकालना है आई इंस्टेंटनेस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे. तो मैं क्या कर दूंगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. अगर मैं लिमिट लगा दूं डेल्टा टी टेंस टू बी जीरो, ठीक है, इसका मतलब जो डिफरेंस ऑफ चार्ज है, सॉरी डिफरेंस ऑफ टाइम है, ये क्या हो जाएगा, जीरो. मतलब अगर मेरा चार्ज जो है फ्लो हुआ क्यू टी टाइम में, टी टाइम में मेरा कितना चार्ज फ्लो हुआ क्यू, और टी प्लस डेल्टा टी टाइम में मेरे पास जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो है क्यू प्लस डेल्टा क्यू. अब अगर मैं डेल्टा टी की वैल्यू जीरो कर देता हूं, इसका मतलब मुझे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट का ही तो चार्ज मिलेगा, टी इंस्टेंट का. ठीक है ना. अगर मैं डेल्टा टी की वैल्यू जीरो कर दूं, सपोज ये टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड है और ये टी इज इक्वल टू 3 + 0.002 सेकेंड है. तो अगर मैं इस 0.002 सेकेंड को जीरो कर दूं, इसे नेग्लेजिबल कंसिडर कर लूं, तो मुझे कितने टाइम पे करंट की वैल्यू मिलेगी एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड. सो सिमिलरली इफ आई पुट दिस डेल्टा टी टेंस टू बी जीरो, तो मुझे जो करंट की वैल्यू मिलेगी वो उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मिलेगी, एंड दैट वैल्यू ऑफ करंट इज टर्म्ड एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट. इसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट. इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू डी एस बाई, सॉरी डी क्यू बाई डी टी. ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसके लिए बहुत ही कम चार्ज फ्लो हुआ होगा, बहुत ही कम टाइम के लिए. ठीक है. तो ये आप इस पॉइंट को नोट कर ले, एंड व्हेन यू नोट इट डाउन जस्ट लेट मी नो, देन वी विल प्रोसीड फर्दर. हैव यू नोटेड डाउन एवरीवन? ये वेलोसिटी का रेफरेंस अगर आप ले लोगे स्पीड का, तो यू विल फाइंड दिस वुड वेरी इजी टू रिकॉल. ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस. Similarly, there are two types of current, average and instantaneous. Average give you the overall value of current, and instantaneous give you the exactly at that particular moment what is the value of current. ठीक है. Anyone, any kind of doubt? Chandana, Sakshi, Rutuja, Jyoti. Any kind of doubt, guys? Sanika, Anita, Vaishnavi. Anyone wants me to repeat it again? Okay, I think this is very clear to you. ठीक है. तो एसआई यूनिट की अगर हम बात करें करंट की, तो वो क्या होती है, एम्पियर होती है. ठीक है. अदर यूनिट्स विल आल्सो बी देयर, दैट इज मिली एम्पियर. ठीक है ना, माइक्रो एम्पियर. जब गैल्वेनोमीटर का करंट आप पढ़ोगे, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस, तब वहां पे जो वैल्यू ऑफ करंट होती है वो माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर्स में माइक्रो एम्पियर. ठीक है. तो दिस
दो चीजें यहां से आपको याद रखने की जरूरत है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? सो इट इज द चार्ज फ्लोन पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल इन अ पर्टिकुलर टाइम इज द करंट, इलेक्ट्रिक करंट. अब वो जो चार्ज होगा ना, वो नेट चार्ज होगा. ठीक है, नेट चार्ज मींस पॉजिटिव चार्ज माइनस नेगेटिव चार्ज. दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्चुअल चार्ज. ठीक है ना. और वी ऑल्सो नो कि पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो करता नहीं है, बिकॉज पॉजिटिव आयन इज वेरी हैवी इन द कंडक्टर. ओनली इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो. सो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, got it. And one most important thing, that that particular area of cross section must be perpendicular to the flow of charge. ठीक है, क्योंकि जब आप परपेंडिकुलर एरिया लोगे ना, तभी आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट देखने को मिलेगा. ठीक है. नाउ इसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल आप लोग सोल्व करो. A 2 mm long cross section of wire is isolated at 20 coulomb of charge is determined to pass through it in 40 seconds. Find the value of current in the wire. बताओ. ये बहुत सिंपल है. अमाउंट ऑफ चार्ज आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है. यू जस्ट हैव टू टेक द रेशियो ऑफ इट. सॉल्व इट एवरीवन. हैव यू फाइंड द आंसर? ज्योति, चंदना, साक्षी, ऋतुजा, अनिता, सानिका, वैष्णवी. बताओ भाई. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन. वेरी गुड. देखो, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टू होता है. क्यू की वैल्यू आपको 20 कूलम दी हुई है और टाइम की वैल्यू 40 सेकेंड. तो मेरा करंट कितना आ गया? 0.5 एम्पियर. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. चलिए आगे चलते हैं. आर यू रेडी फॉर द चैलेंज? चलिए. नाउ दिस वन, दिस इज अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन. नाउ ट्राई टू सॉल्व इट. 10 raised to the power 6 proton are moving in the forward direction and same number of electron are moving in the backward direction through a cross section of area A in a time interval of 10 millisecond. Find the current passing through the cross section. बताओ. Although it is not possible कि proton will flow. ठीक है ना, क्योंकि proton is the nucleus and nucleus are very heavy. Got it? But ठीक है, it is given in the question, so we are trying to solve it. So in this question, what you have to find out the Q net first of all. What is the value of Q net? It is Q positive minus Q negative. अब आपको पॉजिटिव की वैल्यू भी पता है और नेगेटिव की वैल्यू भी पता है. ट्राई टू फाइंड इट आउट. First of all, this is the conductor. This is particular area from which the this charge is being flown. Now, proton, which is represented by P, is moving in forward direction and electron is moving in backward direction. इसे क्या होगा? देख, Q is I क्या होता है? Q by T होता है, which is Q positive minus Q of negative. अब Q पॉजिटिव की वैल्यू आपको कितनी दी है? 10 raised to the power 6. अब देख, इन पे नेट चार्ज कितना होगा? Q is equals to Ne. और Q फॉर पॉजिटिव चार्ज होगा, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है? 10 raised to the power 6 into the charge of one proton, which is plus 1.6 10 raised to the power minus 19 coulomb. Similarly, for Q negative, it will be number of electron into one electronic charge. Number of electron is also 10 raised to the power 6 because same number of electron is being flown. What is the value of E? E is 1.6 minus 1.6, 10 raised to the power minus 19. So this Q negative will become negative of 10 raised to the power 6, 1.6, 10 raised to the power minus 19. So we have put the values here. You can see here. This will become twice, and 1 millisecond is 10 raised to the power minus 3 second. 10 millisecond means 10 into 10 raised to the power minus 3. Now, when you solve it down, you will find that the value of current is 3.2 10 raised to the power minus 11 ampere.
किसी को कोई डाउट है? एनीवन? ओके, देखो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने का क्या है, देखो सेम अमाउंट ऑफ फ्लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इस तरफ हुआ, लेफ्ट टू राइट हुआ, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज विल फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज फ्लो, then you will find out the value of current which is the order of 10 raised to the power minus 11, which is you can consider approximately negligible. So when the number of flow of charge is equal from left to right and right to left, the current will be negligible in that case. You can see the value. It is very, very less. Okay. Now, again, there is another question. Now, this type of question might be uh, have chances to come in the examination. ठीक है, and this is for the instantaneous current. अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें? इफ Q इज इक्वल टू 2t² + 3, विच मीन्स जो चार्ज फ्लो है ना वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है एज अ फंक्शन गिवन है, व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट एट पर्टिकुलर टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड. So what we will do, we will take this Q as 2t² + 3. Now we know that अब इस ये 2 सेकंड पे बोल रहा है, ये नहीं कि टोटल 2 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, एट 2 सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट एट 2 सेकंड. ठीक है, तो आई की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? dQ/dt. ठीक है, dQ/dt का मतलब क्या हुआ? जो भी मेरा एक्सप्रेशन ऑफ चार्ज है उसे मुझे क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है. dQ/dt इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन ऑफ Q with respect to time, and Q is given as 2t² + 3. So d/dt 2t² + 3. तो ये क्या हो जाएगा? 2 × d/dt ऑफ t². t² का डिफरेंशिएशन 2t + 3 का डिफरेंशिएशन 0. 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0. तो ये मेरे पास आ गया 4t. नाउ एट व्हाट वैल्यू ऑफ टाइम इट इज बीन आस्क्ड? एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड. put t is equals to 2, you will find 4 into 2, which is 8 ampere. किसी को कोई डाउट है इसमें? एनी काइंड ऑफ डाउट गाइस? एनीवन? एनी काइंड ऑफ डाउट? साक्षी, ऋतुजा. So I will give you another question based on this type of concept. Q is given as -4t² + 8t. ठीक है, and you have to find the current at t is equals to 1 second. Now tell me the value of current. फटाफट से बता दो भाई, सबके सब. साक्षी, ऋतुजा, सानिका, एवरी वन ऑफ यू, सबके सब बताओ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ current at t is equals to 1 second when charge is given as -4t² + 8t? बताओ. डिफरेंशिएट करो पहले से, and when you get the expression of current, put the value of time in that. चंदना, ज्योति, भार्गव, try to solve it. Anita, try to solve it. वेरी गुड सानिका. सानिका ने सोल्व कर लिया भाई. फर्स्ट नंबर पे सानिका है, सेकंड नंबर पे देखते हैं कौन आता है. साक्षी, ज्योति, एवरीवन. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. बताओ भाई. ओनली सानिका हैज रिस्पॉन्डेड. व्हाट अबाउट यू साक्षी?
Anita, -70. I have given the value of time. Na? At t is equals to 1 second, you have to find the value. Put it there. Okay. देखो, I'll solve it. I think you guys didn't get it. I is dq by dt, na? You just have to differentiate this expression with time. So t square का differentiation क्या हो जाएगा? 2t. So it will become -8 into t because 2 and 4 will be 8. Plus 8t का differentiation सिर्फ 8 होगा. And when you put the value of time t is equals to 1 second here, so it will be -8 plus 8 will results in 0. The amount of flow of charge will be 0. Why are you typing these types of answer like -4, -7? This is 0 and Sanika, you have got it correct. Very good. Everyone who hasn't attempted, please attempt this question. And who have attempted wrong, please try to correct. Okay? Any kind of doubt, Vaishnavi, Anita? Vaishnavi, Anita, any kind of doubt? Rituja, Bhargav? Yes, Anika, please. You have any doubt? So please lower your hand. चलो मैं नहीं करती हूँ. Okay, no problem. चलिए तो move on to the next. ये इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है, सेम है जो प्रीवियस क्वेश्चन था. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर में. ठीक है, देखो ये हमारा पर्टिकुलर कंडक्टर है. ठीक है, कोई भी कंडक्टर है. मैंने सिलेंड्रिकल लिया है कंडक्टर. इस कंडक्टर की जो लेंथ है, पहले हम बेसिक्स टर्मिनोलॉजी को समझेंगे. व्हाट इज द टर्म्स दैट वी आर यूजिंग हियर. सो द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज स्मॉल एल. वोल्टेज जो इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने लगाया हुआ है दैट इज वी. वी अप्लाई. ठीक है. नाउ इस पोटेंशियल की वजह से देयर विल बी अ डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज वी नो दैट डी डेल्टा वी इज नथिंग बट ई डॉट डेल्टा आर. अब देखो डेल्टा आर यानी इसकी लेंथ कंडक्टर की. तो यहां से यहां तक पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, इस वजह से यहाँ पे क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी. ठीक है. इस तरफ से अगर आप मूव करोगे तो पोटेंशियल क्या करेगा? व्हेन यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल विल ड्रॉप. एंड सिमिलरली यू कैन सी हियर you are moving from positive to negative, which means higher potential to lower potential. ठीक है. Now another thing, direction of current is this. We will take, अच्छा, there will be a myth here. हमारा हमने क्या आज तक सीखा है कि जो करंट है, अगर करंट मेरा इस तरफ फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन मेरे ऑपोजिट फ्लो होंगे. ऑपोजिट टू द करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन. ठीक है. पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही हम करंट बोलते हैं. दैट इज वाई व्हेन करंट मूव इन द डायरेक्शन, अगर करंट की डायरेक्शन ये है विच मींस पॉजिटिव चार्ज भी इसी तरफ फ्लो हो. ठीक है. अब ऐसा क्यों है? देखो पॉजिटिव चार्ज तो मूव करता नहीं है क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस आर वेरी हैवी. पॉजिटिव चार्ज मींस न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस इज वेरी हैवी फॉर अ पर्टिकुलर मेटल. तो पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो नहीं करेगा, तो फ्लो करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. So why this assumption is being taking place here? Why we are assuming that current is being transferred or current is being in the direction of positive charge? Because when the current is being defined, na, at that particular time only proton is being uh, in the establishment. ठीक है ना? We only know the value of positive charge. We didn't know the value of negative charge existence at that time when the current is being defined. So we assume that current is because of the flow of positive charge. But later on we discover the electron, then we find it out, okay, the current is being flown because of the free electron, not the positive charge.
but at that time the assumption has been made, the definition has been made, so that is why we are carrying over that information कि current is being flown in the direction of positive charge. ठीक है, actually the current is being flown because of the negative charge, but due to the earlier assumption we take it as it is. ठीक है, अब देखो, तो पॉजिटिव चार्ज इज बीइंग फ्लोन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड यही हमने किसकी डायरेक्शन मान लिया, करंट की डायरेक्शन। ये हमारा पर्टिकुलर सेटअप। अब देखो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। ठीक है, बिकॉज करंट क्या होता है, करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अब इससे क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो किस तरफ फ्लो करेगा, नेगेटिव चार्ज विल फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट। वी नो दैट इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज फ्लो इन द डायरेक्शन ऑपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नाउ ये बेसिक सी चीजें, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, V अपॉन एल, बिकॉज डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। और मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करेंगे सिर्फ, तो वी कैन से दैट V इज इक्वल टू ई इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो ई हियर इज V अपॉन एल। किसी को कोई डाउट है इसमें, ये बहुत सिंपल एक्सप्रेशन आया। ठीक है, ये एक्सप्रेशन तो हम कब से यूज कर रहे हैं, और मैंने आपको इसकी स्टार्टिंग में बताया था कि दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नाउ इसकी बेसिस पर एक हम क्वेश्चन करेंगे। आपके पास ये एक फिगर है, फिगर क्या बता रही है कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं और करंट मेरा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। करंट की डायरेक्शन क्या है, बी टू ए है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ए टू बी। तो बेस्ड ऑन दिस यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। अरे आंसर तो इसमें गिवन ही है ऑलरेडी। व्हेन इलेक्ट्रॉन इन अ रेसिस्टर फ्लो फ्रॉम ए टू बी, देन पोटेंशियल इज ग्रेटर एट ए, ग्रेटर एट बी, सेम एट बोथ, और कांट कम इन। बताओ। हालांकि इसमें क्वेश्चन का आंसर गिवन है, बट बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आप अपना आंसर बताओ। ज्योति, साक्षी, सानिका, एवरीवन। ज्योति, साक्षी, ऋतुजा, वैष्णवी, भार्गव, बताओ व्हाट इज योर करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू। गाइस, एम आई नॉट ऑडिबल टू यू, एम आई ऑडिबल टू यू, स्क्रीन इज विजिबल टू यू, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद दैट। बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। ऋतुजा, व्हाट इज द आंसर ऑफ इट। इसका आंसर है बी, बिकॉज वी नो दैट कि जब भी करंट फ्लो करेगा, करंट विल फ्लो इन द डेवलपमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ डेवलप हुई होगी। अब देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ डेवलप हुई है, तो VA और VB दो पोटेंशियल है मेरे पास, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो वी नो दैट व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विल डिक्रीज, which means VA की वैल्यू क्या होगी, VA is being decreased, VB is being greater. ठीक है, so we can say that the potential at B is greater than the potential at A. That is why the charge flow will taking place, na? The flow of charge will taking place. सेम दोनों हो नहीं सकते, बिकॉज टू फ्लो द करंट, एनी काइंड ऑफ करंट, either it is water current, either it is heat current, to any kind of current there must be a driving force, and driving force will be developed because of the difference of the physical quantities. ठीक है ना, तो यहाँ पे किसका डिफरेंस आया, पोटेंशियल का डिफरेंस आया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करेंगे अपन। Q इज इक्वल टू, आपको फ्लो ऑफ चार्ज गिवन है, Q इज इक्वल टू 2TQ प्लस 3T² प्लस 5, एंड आपको T इज इक्वल टू 0 से T इज इक्वल टू 1 सेकेंड तक एवरेज वैल्यू ऑफ करंट बताना है, एंड T इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर
what is the value of current, which means we are talking about the I instantaneous. So both the question you have to answer. Now I'm giving you 1 minute to solve this question. Try to solve it. Everyone present here, try to solve it down and let me know the answer. Jyoti, Sakshi, Rituja, Vaishnavi. Everyone, are you solving it? Every one of you? Sakshi is saying t is equals to 0, then and is 5. I didn't get your answer. I have said that from t is equals to 0 second to t is equals to 1 second पे you have to find the value of average current. ठीक है ना? And at t is equals to 2 second पे you have to find the instant value of current. And I have asked you one more question. Try to answer of it in the chat box. अब देखो, we will try to solve it. तो आई एवरेज की वैल्यू मुझे पता है कि आई एवरेज इज नथिंग बट दी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. अब टाइम मुझे गिवन है 0 से 1 सेकंड, विच मींस 1 सेकंड इज देयर. ठीक है, डेल्टा क्यू. So we will find the value of charge like this. Q at t is equals to 0. Put t is equals to 0. It is 5 m, 5 coulomb. At t is equals to 1, charge will be 2 into 1 cube, which is 2 into 1 plus 3 into 1 square is also 1 plus 5. So it will become 2, 3, 5 plus 5 is 10. So t is equals to 0 से t is equals to 1 तक कितना चार्ज फ्लो हुआ है? Q net will be QT is equals to 1 minus QT is equals to 0. अभी तो बताया था. तो t is equals to 1 पे कितना चार्ज है? 10. और t is equals to 0 पे कितना चार्ज है? 5 कूलम. सो इट विल बी 5 कूलम. ठीक है, ये तो वैल्यू ऑफ चार्ज होगी. अब करंट कितना होगा? आई एवरेज विल बी amount of charge, which is 5 coulomb, divided by the time. Time is also 1 second. 1 minus 0 is 1. So it is 5 ampere. I think Sakshi, you are saying that if 5 ampere is the value of average current, then you are absolutely correct. Okay. Now, what is the value of instantaneous current? I instantaneous. I instantaneous will be dq by dt. dq by dt, just differentiate this expression. It will become 2 into t cube. T cube का differentiation is 3t square. So it will become 6t square plus 3t square will become 6t plus 0, because differentiation of 5 is 0. Now you have to find the value at t is equals to 2. So I instantaneous at t is equals to 2 will be put the value at t is equals to 2 here. So it will become 6 into 4 plus 6 into 2. 24 plus 12, 36 ampere. Okay. So this is the value of. Okay. Clear है सभी को? Everyone clear with this? Any kind of doubt in this? Vaishnavi, Sakshi, any kind of doubt? Sanika, Rutuja. तो आज लेक्चर यहीं तक रखते हैं. In the next class, we will be talking about the drift velocity, drift and Ohm's law and mobility and resistivity of the conductor. ठीक है? Till then, take care of yourself, eat healthy foods,
and take proper rest. Bye bye, take care. किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, otherwise the lecture is